Hello bachcho, let's see the question. Here in this question we are provided with the assertion and we are provided with a reason. Okay, let us look at the assertion first. It is saying that gap junctions, they perform cementing functions to keep the neighboring cells together. Okay, so in short, what we can say that these gap junctions are playing a very important role for having the connection between the two neighboring cells together. Now let us look at the reason also. Here it is regarding the tight junctions. Okay, so when we talk about tight junctions, it is saying that it facilitates the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of the adjoining cells for the rapid transfer of ions, small and the big molecules, etc. Okay, so these are the two statements, or we can say assertion and reasons are given to us. Okay, so if we have to solve this question, first of all, we have to understand which is the key concept that we have to use here. Then we can see the key concept that we will use in this type of question as the cell junction. First of all, we have to understand what we mean by the term that is cell junction. तो जब भी हम बात करते हैं सेल जंक्शन की, चलिए समझ लेते हैं ये एग्जैक्टली होता क्या है. So we can say the cell junctions are also known as intercellular bridge. Okay, so इन्हें intercellular bridge भी कहा जाता है because ये help करते हैं providing the contact between the two different kinds of cells. And अगर बात करें how it is composed of, so we can say it is a multi-protein complex. So ये काफी सारे प्रोटीन से मिलके बना हुआ है. That's why known as the multi-protein complex. चलिए बात करते हैं कि सेल जंक्शन का मेन फंक्शन क्या होता है. जब हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन दैट इज डन बाय इट, तो वी कैन से इट विल बेसिकली एस्टैब्लिश द कांटेक्ट. अब कांटेक्ट दो तरीके से हो सकता है. एक तो है बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच में कांटेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना है, देन आल्सो वी रिक्वायर्ड सेल जंक्शन. एंड द सेकंड विल बी दैट इफ वी वांट टू हैव द कांटेक्ट between the cell and the ECM, that is the extracellular matrix, then also we require the presence of this cell junction. तो ये हो गई बात cell junctions की. Now अगर बात करें what are the three major types of cell junctions that we can have or we can find. The three major types, the first one will be the adhering junction, the second one will be the gap junction, and the third and the final one will be the tight junction. तो ये जो तीन टाइप के जंक्शंस है, दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल. तो जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है दैट इज रिगार्डिंग द गैप जंक्शन. अगर हम बात करें गैप जंक्शंस की, इनका फंक्शन क्या होता है, तो वी कैन से हियर दैट दिस गैप जंक्शंस, दे आर बेसिकली helping, or we can say it is facilitating the communication between the two cells. Okay, तो ये फैसिलिटेट क्या करता है ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स. ठीक है, कैसे होगा, बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स. तो जो दो सेल्स है, दो जो एडजॉइनिंग सेल्स है, उनके साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करती है ताकि क्या हो सके, रैपिड ट्रांसफर हो सके ऑफ द मटेरियल्स between one cell to other cell. So this is the function that is carried out by the gap junction. But हमें क्या दिया है, it is done by tight junction. तो ये जो function is basically not done by the tight junction, else it is done by the gap junction. That's why reason तो हमारा incorrect हो गया. Okay, और अगर बात करें हम assertion की, यहाँ पे assertion में क्या दिया है हमें कि इट इज टॉकिंग अबाउट गैप जंक्शन. हमने क्या देखा, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, बट यहाँ पे क्या गिवन है दैट दे परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. तो ये क्या करता है, नेबरिंग सेल्स को एक साथ रखने में हेल्प करता है. तो ये जो फंक्शन है, इट इज बेसिकली carried out by the adhering junction. So adhering junction is basically playing a very important role in establishing the contact between the neighboring cells. ओके, तो अगर नेबरिंग सेल्स के अंदर हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है या कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना है, देन वी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ दिस अडहेरिंग जंक्शन. चलिए बात कर लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टाइट जंक्शन ऑल्सो.
जब हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर प्रेजेंट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो वी कैन से प्रिवेंट्स द ट्रांसफर of molecules between one cell to other cell। तो ये एक सेल से दूसरे सेल में जो भी कम्युनिकेशन होता है, ये जो भी ट्रांसफर होता है, उसको अलाउ नहीं करता। ओके, तो हमने देख लिया कि हमारा यहाँ पे जो असर्शन है वो भी गलत है, और जो रीजन है वो भी गलत है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, then we can say simply that option D is the correct answer for this question। Okay, so we can say that the final answer for this question will be option D, that is both the assertion as well as the reason are false। I hope you understood it well. Best of luck.